COVID numbers are rising, but there is also a crisis of oxygen. This is the new COVID mess. As cases are surging, shocking reports are coming in from hospitals across the country. This is not something that has happened in one state. Oxygen is in short supply, ladies and gentlemen. And this is proving to be a big, big problem. Wasn't lockdown, the most important question that we'll ask, wasn't the lockdown meant to build this capacity so that we are able to make sure that we have our medical infrastructure in place? What has happened to that? Why is this oxygen in short supply? And are our hospitals still not COVID prepared? We'll be soon adding 1 lakh cases per day. Let's quickly take a look at this presentation and then we'll throw this open for a discussion. Maharashtra is facing a huge oxygen supply crisis that is impacting COVID patients who are critical. According to the Indian Medical Association, only 60% of the total requirement is being met. The medical body also claims that shortage has resulted in black marketing of oxygen. जो भी ऑक्सीजन की ज़रूरत है उससे सिर्फ 60% ऑक्सीजन का सप्लाई हो रहा है और ये प्रशासन का बहुत ही बड़ा फेल्योर है। महाराष्ट्र के शहरी इलाकों में और ग्रामीण इलाकों में खासकर ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। महाराष्ट्र के पुणे, सोलापुर, सातारा, उस्मानाबाद, ठाणे, कोल्हापुर ऐसे कई जिलों में ऑक्सीजन का सप्लाई बिल्कुल ही नहीं हो रहा है। ऑक्सीजन के सप्लाई में काला बाजार बहुत ही तरीके से हो रहा है। ऑक्सीजन का एक सिलेंडर है वो 500-600 से लेकर 1500 रुपए तक हॉस्पिटल्स को मिल रहा है। इसमें ये कम से कम 10 या 20 गुना ज़्यादा पैसे हॉस्पिटल्स को आ रहे हैं। ऑक्सीजन का सप्लाई बहुत ही शॉर्टेज हो गया है। बहुत मुश्किल से हॉस्पिटल्स को ऑक्सीजन का सप्लाई होते रहा है। हम हमारी तरफ से बहुत कोशिश कर रहे हैं लेकिन सप्लाई नहीं हो पा रहा है। जो वेंडर्स है वो सही टाइम पे सही वक्त पे ऑक्सीजन सप्लाई कर नहीं सकते हैं। इस हालात में अगर डॉक्टर्स एक प्रकार पेशेंट सीरियस हो गया है तो हम कुछ भी नहीं कर सकेंगे, हम हतबल रहेंगे और हमें सिर्फ देखते बैठने से कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए जल्द से जल्दी ऑक्सीजन का सप्लाई निरंतर रेगुलर होना चाहिए। There are around 5 big manufacturers in Maharashtra and around 80 refillers through which oxygen is supplied to state hospitals. Prior to COVID, the price of oxygen was around 20 rupees per cubic meter. However, now, oxygen is being offered to refillers by manufacturers for 35 rupees per cubic meter and the price touches 45 to 50 rupees by the time it reaches the hospital or the person who is in need. Critical patients need around 14 cubic meter of oxygen per day. There are around 8,500 critical patients of COVID and oxygen is extremely important for them. President of the Food and Drug License Holder Foundation admits a flaw in the oxygen supply chain. तो एकाएक रेट का बढ़ जाना और दूसरी बड़ी बात है कि जो 80 रिफिलर्स हैं उनके पास एफडीए के साथ क्लब होकर जितने कोविड हॉस्पिटल महाराष्ट्र में रन कर रहे हैं वो एक एक रिफिलर्स को एक एक सर्टेन जो कोविड हॉस्पिटल्स हैं उनकी जवाबदारी अगर दी गई होती तो ये जो कमी है वो कमी शायद महाराष्ट्र में नहीं आती। लेकिन एफडीए प्रशासन की मिसमैनेजमेंट मैं कह सकता हूँ या फेलियर मैं कह सकता हूँ जिसकी वजह से आज जो है महाराष्ट्र में गैस बाटले की कमी सामने दिखाई पड़ रही है। The Food and Drug Foundation has also written to the FDA to stop black marketing of oxygen from Maharashtra. Meanwhile, the state government has asked to form a panel in every district who will be in contact with the oxygen supplier. Also, hospitals have been asked to ensure that it is used under the supervision of experts. With Pooja Bharadwaj in Mumbai, Ritti Isar for NDTV.